Hello everyone, welcome to EduTap, and in this today's session we are going to discuss the top 50 MCQs from the month of July 2022. And guys, this is the part 2 of the top 50 MCQs for the month of July. We have already done the part 1 in the previous week, and in this session guys we are going to basically specifically revise all of the things that we have discussed, that we have studied in the fast track session of the last 1 week. And guys, I would like to tell you here that this session is important for the RBI Grade B, NABARD Grade A as well as SEBI Grade A exam. ठीक है जी, so let's begin the session. So guys, before beginning the session, if you are new to our YouTube channel, kindly subscribe it and press the bell icon to receive all the latest updates of the courses and videos offered by us. And you can also join our Telegram channel to get the access to the PDF of the sessions. To join the Telegram channel, kindly click on the link given in the description below. So guys, this is a very good news for all the NABARD Grade A aspirants that we are running a special NABARD sale in which we are giving you special offer of flat 30% plus additional 20% off on our various courses, that is of the NABARD Gold, Silver as well as combo NABARD Grade A package. ठीक है जी? But in order to avail this discount, what you are required to do, you are required to use the code NABARD, which is only valid till 16th of July 2022. So do not forget to use this code in order to avail this discount. So guys, let's begin the session. And before beginning the session guys, there is a very small instruction to all of you that you are required to just tell me about that what exactly is the right option. So guys, what you can do, just type the question number and then give me the right answer, that is right option that you think, in the comment section. ठीक है जी? And apart from that, you are also required to tell me about your scores after the end of the session. So keep a calculation of your scores as well. So guys, here is the very first question on your screen. So please answer me that what exactly is the right answer to the question number 1. So the question number 1 is that which of the following electric two-wheeler makers has recently unveiled India's first indigenously developed lithium ion cell? See guys, what exactly is making this news more important for you from the exam point of view? Because this is one of the electric two-wheeler maker which has recently unveiled India's first indigenously developed lithium ion cell. These two words, that is India's first, is making this news more important. ठीक है? So guys, when I talk about the right answer to the question, the right answer here is option B, that is Ola Electric. So Ola Electric has recently become the first electric two-wheeler maker in order to unveiling India's first indigenously developed lithium ion cell. ठीक है जी? I hope this is very much clear. Moving on to the next question. So guys, the next question is about the 10th World Peace Forum, and you are required to tell me that at which one of the following locations this 10th World Peace Forum was recently held. So guys, see, I'm going to tell you here that this session is going to be rapid fire, so you are really required to pace up your reading speed as well as your answering speed in order to quickly get through the question and answer the question in the comment section. ठीक है जी? So guys, here when I talk about the right answer is option B, that is Beijing, China, where the 10th World Peace Forum was held recently. Moving on to the next question. So the next question is about the Reserve Bank of India. See, Reserve Bank of India has recently imposed a monetary penalty on one of the prepaid instrument. And what exactly was the reason behind that? It was basically non-compliance with the certain provisions which are being provided by the Reserve Bank of India. So that was the reason कि उस particular prepaid instrument giver पे क्या है, 1.67 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई है. So guys, what is exactly the right answer? Which one of the following organizations has been recently penalized by the Reserve Bank of India? And guys, here the right answer to the question is option B, that is Ola Financial Services Private Limited. See guys, here Ola is recently in the news, बहुत ज़्यादा ये news के अंदर रहा है, and that is the reason that you are really required to remember about that. और guys, यहाँ पे मुझे इससे और याद आता है कि जो ओला के इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, तो यहाँ पर देखा गया ऑल इंडिया नेशनल लेवल पे कि काफ़ी सारी जो बाइक्स हैं उनमें बर्निंग का इशू हुआ, तो उसके लिए भी इंडियन गवर्नमेंट ने एक रिसेंटली एक पैनल बनाया गया था. सो यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी कि उस पैनल को हेड कौन करने वाला है. ठीक है? दैट इज द होमवर्क पार्ट फॉर ऑल ऑफ यू. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is, here you are required to tell me कि इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री के साथ recently SBI कैप वेंचर लिमिटेड ने MOU साइन किया है, एक अग्रीमेंट साइन किया है फॉर द जॉइंट प्रोजेक्ट्स विद द ग्लोबल पार्टनर्स. ये क्या करने वाले हैं इस MOU के अंदर? दे आर बेसिकली गोइंग टू मेक एस्टैब्लिश द ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फंड.
और ये फंड किसके लिए लॉन्च होगा? फॉर द जॉइंट प्रोजेक्ट्स विद द ग्लोबल पार्टनर। सो उसके लिए क्या है कि एसबीआई कैप वेंचर्स लिमिटेड ने एक एमओयू साइन किया है एक इंडियन मिनिस्ट्री के साथ। एंड गाइस हियर द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज, सॉरी गाइस, हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ऑप्शन डी इज नॉट द राइट आंसर, डू नॉट वरी, आई विल बी करेक्टिंग इट इन द पीडीएफ एज वेल। ठीक है जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मिल्मास Ernakulam Dairy. ठीक है, so it is set to become the first fully solar powered plant. See, this is making it really very important from the exam point of view. Whenever you see the words like largest, first, biggest, so okay, these are those words which makes that kind of news article important from the exam point of view, and that's why here is the question in which you are required to tell me ये जो हमारा पहला fully solar powered plant है that is Milmas Ernakulam Dairy. So guys, ये जो है हमारा, इसको funding कौन देने वाला है? It's National Dairy Development Board और State Bank of India, National Bank for Agriculture and Rural Development, Small Industries Development Bank of India और IDBI Bank Limited. So guys, इसी तरीके के questions आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, and we have seen that such kind of questions are being asked on the similar lines only in the exam. That is why we are bringing such kind of questions for you in our session. So guys, here the right answer to the question is National Dairy Development Board. ठीक है जी, moving on to the next question. So the next question is India's first, once again guys, see, India's first national coalition platform for urban nature-based solutions has recently been launched by which of the following organization? So in this question you are just required to tell me the name of the organization जो कि इंडिया की सबसे पहली national coalition platform है for urban nature-based solutions. So guys, please tell me quickly that what exactly is the right answer. Here three options are basically mentioned here, and the last that is option D and E are basically about the combination of the first three options. So guys, here when I talk about the right answer to the question is option D, that is World Resources Institute India, as well as the National Institute of Urban Affairs Climate Center for the cities. See guys, here you can see that what kind of questions are being asked in the exam, और यहाँ पर कैसे questions हैं और किन लाइंस पर, किन डायमेंशंस पर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू मेक ऑब्जर्वेशन, और उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम के अंदर भी रेडी रहना है कि ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, एंड यू मस्ट बी सक्सेसफुली आंसरिंग दीज क्वेश्चंस इफ यू आर वाचिंग आवर दीज सेशंस. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन से बैंक ने रिसेंटली पार्टनर किया है केरला के फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ? बेसिकली ये जो पार्टनरशिप हुई है इस बैंक की, इट इज बेसिकली गोइंग टू एनेबल द डिजिटल कलेक्शन ऑफ पेमेंट्स एट इको टूरिज्म सेंटर्स विच आर देयर इन द केरला. ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी दैट व्हाट एग्जैक्टली इज द नेम ऑफ दैट बैंक विच हैज पार्टनर्ड विद द केरला's फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट. तो गाइस जल्दी जल्दी बता दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर. इट्स सीएसबी बैंक, फेडरल बैंक, साउथ इंडियन बैंक, करूर विश्या बैंक और आरबीएल बैंक. एंड गाइस हियर द राइट आंसर इज साउथ इंडियन बैंक, दैट इज द राइट आंसर. सो इन द comment section also tell me that who is presently the CMD of the South Indian Bank. See guys, whenever such kind of banks are there in the news, you are always required to remember कि उसका CMD कौन है. ठीक है, apart from that उसकी tagline क्या है, उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड रिमेंबर, यू शुड कवर व्हाइल यू आर कवरिंग द न्यूज आर्टिकल्स व्हिच आर रिलेटेड टू बैंक्स. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द फील्ड्स मेडल. सो गाइज ये आप लोगों के लिए गूगली क्वेश्चन है. लास्ट टाइम जब हमने टॉप 50 एमसीक्यूज का सेशन लिया था, देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन द फील्ड्स मेडल, बट नाउ दिस क्वेश्चन इज नॉट एग्जैक्टली दैट क्वेश्चन. दिस इज अ ट्विस्टेड क्वेश्चन. जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दी गई थी, आज उसका टेस्ट है that whether you have covered the last session or not. ठीक है, so guys here you are required to tell me कि इनमें से कौन से वो लोग हैं, पर्सनैलिटीज हैं जिन्होंने recently फील्ड्स मेडल जीता है. इट्स मरायना वियाजोस्का, ह्यूगो डोमिनिल कॉपिन और जून हू. So guys, please tell me what is the right answer here. So guys, here 5 options are being mentioned, and in this you always remember that whenever such kind of medals are being given, such kind of various biggest awards are being conferred, then the name of the personalities becomes really important from the exam point of view, and that is why such kind of question has been brought up here for all of you. And when I talk about the right answer is option E, that is all these people have recently won the Fields Medal 2022. ठीक है जी गाइस, और इसको डिटेल में मैंने अपने पिछले सेशन के अंदर बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था. यू कैन गो थ्रू दैट एज वेल. सो गाइस नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हियर यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी कि इनमें से कौन सी कंपनीज हैं जिन्होंने
रिसेंटली कोलैबोरेट किया है आईआईसी बैंगलोर के साथ एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाने के लिए इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट रिसर्च इन द एरियाज ऑफ नेटवर्क्ड रोबोटिक्स. सो लेट्स सी हु विल आंसर द क्वेश्चन करेक्टली इन द कमेंट सेक्शन. The options are Oppo, Samsung, Nokia, Apple, Micromax. So guys, 5 options, 5 different phone manufacturers have been mentioned to you. You're just required to choose one correct option and tell me in the comment section. And guys, when I talk about the company which has recently collaborated with ISC Bangalore, it was basically Nokia, and that is why the right answer is option C. Let's move on to the next question. So the next question is about the appointment of India's new Sherpa for the group of 20. See guys, this question was discussed by me in the top 50 MCQs which was held in the last week. So I really believe and I expect all of you to answer the question correctly in the comment section. तो मुझे जल्दी बताइए कि जो इंडिया का नए शेरपा हैं G20 के लिए वो कौन अपॉइंट हुए हैं. First of all, I would like to tell you here that he is going to replace पीयूष गोयल. So guys, आपका ये ऑप्शन भी तो हो जाता है एलिमिनेट. ठीक है. और जब हम बात करें ऑप्शन ए की, सो दिस पर्सन दैट इज द लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यन वाज बेसिकली अपॉइंटेड एज द हेड फॉर द इंडिया फॉर द यूनाइटेड नेशंस मिशन इन द साउथ सुडान. ठीक है. तो क्या जब हम बात करते हैं बाकी चीजों की, सो अमिताभ कांत इज द फॉर्मर सीईओ ऑफ द नीति आयोग. ठीक है. सुमन बेरी इज बेसिकली बीइंग अपॉइंटेड एज रिसेंटली एज द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग. सो गाइस, क्या बचता है सही जवाब? सो गाइस, हियर द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज अमिताभ कांत. ही वाज द former CEO, and guys, presently, see, he is the former CEO. Presently, when I talk about the present CEO of the Niti Aayog, we have covered that in the previous session as well. That is P. Iyer, who is basically the presently been appointed as the CEO of Niti Aayog. So guys, Amitabh Kant has been recently appointed as India's new Sherpa for the group of 20, replacing Piyush Goyal. ठीक है जी. I hope that this question is very much clear to all of you. Let's move on to the next question. And the next question is about the Asian Under 20 Championship. So in this question, आपको मुझे बस ये बताना है कि ये जो चैंपियनशिप है रिसेंटली कौन सी प्लेस पे हुई थी, इनमें से कौन सी कंट्रीज में हुई थी? कतर, बहराइन, यमन, कुवैत और UAE. These are the 5 options mentioned to you. See, such kind of questions are being asked in the exam कि कोई अगर फेमस हमारी चैंपियनशिप हुई है तो उसका विनर कौन था, उसका वेन्यू क्या था. ठीक है. और अगर यहाँ पर बात होती है मैक्सिमम मेडल्स, यहाँ पर गोल्ड मेडल्स किसने जीते थे, तो ये चीजें भी आप कवर कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. बट गाइस, वो जो रहेंगे हमारे क्वेश्चंस वो बेसिकली ज्यादातर आपके ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स जो ऐसे बड़े इवेंट्स है वहां से पूछे जाते हैं. बट हियर व्हेन आई टॉक अबाउट द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज बहराइन. ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द करची फेस्टिवल. सो हियर यू आर रिक्वायर्ड टू जस्ट टेल मी कि ये जो फेस्टिवल है ये कौन सी स्टेट के अंदर बनाया जाता है. रिसेंटली उसकी सेलिब्रेशंस को कमेंस किया गया है उस पर्टिकुलर स्टेट में. एंड गाइस, हियर द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज त्रिपुरा. तो त्रिपुरा के अंदर बनाया जाता है करची फेस्टिवल. सो गाइस, डू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पार्ट इन द एग्जाम. ठीक है. Let's move on to the next question. The next question is on the important days, and this day is basically related to one of the languages, that is World Kiswahili Language Day. So just tell me that on which of the following dates we basically the whole world celebrates this particular language day. Let's see who will answer the question in the comment section. See guys, whenever there is a news article on the important day, you are required to focus on 2 important things. That is, first, that what exactly is the theme, and second most important thing is the date. And उसी डेट के ऊपर उसी डायमेंशन पे यहाँ पर आपको इस सेशन के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है that on which of the following dates the World Kiswahili Language Day is being celebrated across the world. And here the right answer to the question is option E, that is 7th of July. ठीक है. When I talk about the theme is Kiswahili for peace and prosperity. So guys, do remember this part. These are the 2 important dimensions. Third important dimension भी होती है, but it is very rarest of the rare, that is who is the host country for the celebration of that particular day. So आपको ये हर एक इंपॉर्टेंट डे की न्यूज में नहीं मिलेगा, बट स्टिल देयर आर सम रेयर केसेस वेयर यू कैन फाइंड सच काइंड ऑफ थिंग एज वेल. वो भी आपको कवर करना जरूरी है. ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड उन्होंने एक MOU साइन किया है. आपको जस्ट बताना है कि इनमें से कौन सी कंपनी के साथ ये MOU साइन किया गया है GACL द्वारा टू सेटअप इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल स्केल ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट इन गुजरात. तो यहाँ पर देखो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कि इंडिया का पहला कमर्शियल स्केल ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट सेटअप किया जा
जा रहा है, कौन सी स्टेट में होने वाला है, गुजरात के अंदर होने वाला है, कौन सी कंपनीज ने यहाँ पर MOU साइन किया है, दैट इज GACL, और किसके साथ किया है, that is what you are required to tell me. So let's see that what exactly is the right answer to the question. Here the right answer is option B, that is NTPCRE Limited. So guys, याद रखिएगा, this is really a very important question which can be asked in the exam, and we all know कि NABARD grade A का exam भी जल्दी notification आने वाला है. Most probably it will be coming on the 18th of July. So be प्रिपेयर्ड फॉर दैट. सी गाइज, उसके लिए तैयारी शुरू कर दीजिए, बहुत ही हाई टाइम है ये. एंड इफ यू विल बी स्टार्टिंग अर्ली, देन यू विल बी हैविंग एन एज over other aspirants as well, and you will be having more and more chances in order to clear this particular exam. ठीक है, let's move on to the next question. So the next question is, which of the following award has been introduced in the public administration in the field of academic excellence? So guys, यहाँ पर recently इनमें से एक award यहाँ पर introduce किया गया है, and this is basically in the field of public administration of academic excellence. तो यहाँ पर जल्दी बताइए कि क्या है उस particular award का नाम. It's Dr. APJ Abdul Kalam Award, Dr. Rajendra Prasad Memorial Award, Homi J. Bhabha Memorial Award, CV Raman Memorial Award, or none of the above. See guys, the awards are really very important from the exam point of view. और जब नाबार्ड की बात करें तो guys, यहाँ पर जो उनका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है 20 मार्क्स का, तो वहाँ पर ये जो क्वेश्चंस है अवार्ड्स के ऊपर, स्पोर्ट्स के ऊपर यहाँ से पूछे जाते हैं. दैट्स व्हाई यू आर रियली रिक्वायर्ड टू कवर देम कॉम्प्रिहेंसिवली फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो हियर व्हेन आई टॉक अबाउट द राइट आंसर इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड. Let's move on to the next question. So the next question is, which of the following banks have been selected by the Ministry of Defense to provide financial services in the overseas procurement? See guys, recently Ministry of Defense ने एक इंडियन बैंक को यहाँ पर सिलेक्ट किया है ताकि वो फाइनेंशियल सर्विसेज जो भी ओवरसीज प्रोक्योरमेंट रहती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, वहां पर वो फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड कर सके. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बैंक गाइज? हियर the right answer is option E, that is HDFC Bank, Axis Bank, ICICI Bank. All these banks, 3 banks have been selected by the Ministry of Defense. And guys, here I would like to tell you that recently RBI has approved the Hdfc Bank's merger with the parent company HDFC. This is once again a very important news article, and guys, as RBI is really very important organization to be covered, so that's why you must remember such kind of news articles which are related to this. ठीक है, let's move on to the next question. So the next question is on the LE Annexure. See, this is the Queer Community Financial Inclusion Initiative, और आपको बताना है कि इनमें से कौन से बैंक ने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है. Here the name of the initiative is LE Annexure. So let's see who will answer the question correctly. Options, 5 options are being mentioned here, and guys, here the right answer to the question is option B, that is 5 money. So यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिकली उसका जो एम है, पर्पस है इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव का, वो क्या है, that is to empower LGBTQ customers to have a better access to the financial services. See, एक बहुत ही important यहाँ initiative लिया गया है financial inclusion के लिए. The name of the initiative is also important, that is LE Annexure. So guys, I really hope that this is really very much clear to all of you. Let's move on to the next question. So the next question is once again on the HDFC. तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कंपनी के साथ HDFC ने पार्टनरशिप की है in order to support growth priorities that will easily connect back and front end systems. तो यहाँ पर you are just required to tell me कि कौन सी कंपनी के साथ HDFC बैंक ने ये पर्टिकुलर MOU साइन किया है. So we have already discussed one more important part about the HDFC, that is RBI's approval. Now you are required to tell me and answer this question correctly in the comment section. So guys, here the right answer is option D, that is Salesforce. So Salesforce के साथ यहाँ पर HDFC ने पार्टनरशिप की है. So guys, these are the important news articles from the past week that you have already discussed in them, that you have already studied in the fast track sessions जो हमारे डेली सुबह 8 AM पर आते हैं YouTube के चैनल पर. So guys, always do that. See, daily basis पर जब आप current affairs को cover करते हैं, it really becomes easy for you to revise and to remember them. And revision अगर हमें करनी है तो उसका best source क्या है? Solving the MCQs, and that is why this session is really important for you to revise all these current affairs of the past week. Moving on to the next question. So the next question is on the first edition of Eloda Boxing Cup, and you are required to tell me कि इनमें से कौन सा इंडियन है जिसने की रिसेंटली गोल्ड मेडल जीता है इस बॉक्सिंग कप के लिए. ठीक है, इस बॉक्सिंग कप के अंदर विच वॉज बेसिकली हेल्ड इन नूर सुल्तान कजाकिस्तान, उसमें यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी द नेम ऑफ द इंडियन बॉक्सर हु वन द गोल्ड मेडल रिसेंटली. एंड गाइस, हियर द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज बोथ अल्फिया पठान एंड गीतिका.
So these are the two Indian boxers who have won the gold medal which in the recently held Elroda Boxing Cup. And guys, one more important thing, that this was the first edition of this boxing cup which was held in year 2022. Moving on to the next question. So the next question is on the Star Alliance. So guys, Star Alliance, it is the largest global airline alliance. And when I talk about this particular alliance, guys, whenever such kind of major alliances, international alliances are in the news, you are also required to remember that what is the headquarter, who is the chief of such kind of alliances. So when I talk about the headquarter, its headquartered is in Frankfurt, Germany. ठीक है जी. तो चीफ के बारे में आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर दैट हु इज बेसिकली हेडिंग दिस पर्टिकुलर स्टार अलायंस प्रेजेंटली. नाउ जब हम बात आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, तो हियर यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी द नेम ऑफ द कंपनी जो कि बनी है पहली वर्ल्ड की पहली इंटरमोडल पार्टनर ऑफ द स्टार अलायंस. Here 5 options are being mentioned here, guys. Just tell me the name of the company and you will be through the exam. So guys, here when I talk about the Star Alliance question, the right answer to the question is option A, that is Deutsche Bahn, which has become the very first country to become the world's first intermodal partner of the Star Alliance. So I hope that this is very much clear to all of you. Let's move on to the next question. So the next question is, which of the following companies has been selected as a strategic technology provider by the National Insurance Company Limited, NICL, which is headquartered in Kolkata. See guys, whenever such kind of organizations are there in the news, always cover that where it is being headquartered. ठीक है? Because sometimes a question can be asked about on this particular line in the exam. So यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विच इज हेडक्वार्टर्ड इन कोलकाता, उसने कौन सी कंपनी को सेलेक्ट किया है एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर. Here the right answer to the question is Cognizant. So Cognizant has been selected by the NICL. I hope this is very much clear. Let's move on to the next question. So guys, next question is that which of the following state has become the first state in India to have exclusive research and development policy. See guys, recently इनमें से एक स्टेट है जो पहली स्टेट बनी है इंडिया के अंदर जो अपनी ही एक एक्सक्लूसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लेकर आए हैं. एंड गाइज हियर द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज कर्नाटका. एंड गाइज वी ऑल नो Karnataka. See, last week I have already discussed with you that Karnataka state government has recently constituted the Kempegoda International Award. ठीक है जी. एंड हियर 3 persons were being nominated, that is SM Krishna, who was the former CM of Karnataka. Then there was Narayan Murthy ji, and then there was Prakash Padukone, the Indian badminton star, who has been nominated for this particular award. So इस तरीके से you can just interlink different news articles and you can remember them, you can revise them very efficiently. Let's move on to the next question. So the next question, you are required to tell me the name of the insurance company जिसने कि start किया है Smart Capital Guarantee Solution. A very easy question guys. एक इंश्योरेंस कंपनी ने रिसेंटली एक नया प्रोडक्ट निकाला है, दैट इज स्मार्ट कैपिटल गारंटी सोल्यूशन. यू आर जस्ट रिक्वायर्ड टू टेल मी द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी. एंड हियर द राइट आंसर इज मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. सो यहाँ पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, जस्ट गो थ्रू इट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसने एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है जापान बैंक के साथ फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन. सो जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के साथ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है. यू आर जस्ट रिक्वायर्ड टू टेल मी दैट व्हाट एग्जैक्टली इज द अमाउंट ऑफ दैट लोन एग्रीमेंट. बट यहाँ पर गाइज आई वुड लाइक टू टेल यू हियर दैट जापान was recently in the news. Why it was in the news? Because the former PM of the Japan, that is Shinzo Abe ji, he was assassinated, and that is why you are also required to remember about that particular part as well, because it was recently very well in the news. ठीक है जी. So guys, now when I talk about the amount of the loan agreement amount that was being signed between the Power Finance Corporation or Japan Bank for International Corporation, here the right answer to the question is Japanese yen 30 billion. तो यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट आपको क्लियर हो जाती है कि जो जापान की हमारी करेंसी है दैट इज जापानीज येन. सो व्हेन आई टॉक अबाउट द कैपिटल, व्हाट इज इट? इट इज टोक्यो. ठीक है जी. तो जब भी कोई कंट्री आपकी फॉरेन कंट्री न्यूज के अंदर है, यू आर ऑलवेज रिक्वायर्ड टू कवर इट्स करेंसी एज वेल एज कैपिटल. तो ये स्टैटिक पार्ट भी आपको याद रखना जरूरी है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Women's World Banking and Bank of Baroda have launched Baroda Jan Dhan Plus in which of the following states? You are just required to tell me the name of the state जहां पर Women's World Banking और Bank of Baroda ने recently Baroda Jan Dhan Plus नाम की ये जो प्रोडक्ट है ये लॉन्च किया है. एंड गाइज हियर द
3 states are being mentioned, that is उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, और आपको बताना है कि क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब. So guys, we are on the 25th question. I am reminding you that keep a toll on your scores as well, because at the end of the session I will be asking the your scores as well, and you are required to comment your scores in the comment section below. ठीक है? So guys, here the right answer to the question is both उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड आर द राइट आंसर, जहां पर ये बड़ौदा जनधन प्लस की जो सर्विसेज है यहाँ पर स्टार्ट की गई है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is about the Startup School India initiative which was being launched by Google. So here you are just required to tell me कि ये कितने वीक्स का एक वर्चुअल प्रोग्राम होने वाला है. द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट इज बीइंग लॉन्च फॉर द स्मॉल सिटी एंटरप्रेन्योर्स. सो गाइस, जो इंडिया के अंदर जो छोटे छोटे सिटीज हैं वहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए ये एक इनिशिएटिव यहाँ पर लेकर आया है गूगल. एंड गाइस, हियर द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज 9 वीक. सो गाइस, यहाँ पर जब हम देखते हैं इसको तो मुझे एक ऐसा ही एक और इनिशिएटिव याद आता है, दैट इज गोल इनिशिएटिव, जिसको लॉन्च किया था मेटा ने. मेटा, दैट इज फेसबुक. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द गोल इनिशिएटिव, इट इज बेसिकली गोइंग ऑनलाइन एज लीडर. एंड इसका यहाँ पर 2.0 वर्जन रिसेंटली लॉन्च किया गया है, एंड दैट इज व्हाट यू आर रियली रिक्वायर्ड टू रिमेंबर फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन गाइज, आई वुड लाइक टू टेल यू हियर दैट 2019 के आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर मेंस एग्जाम में गोल के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. दैट इज व्हाई इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. आई होप दिस इज क्लियर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is India's first company to get BIS certification for made in India lithium ion cells. So you're just required to tell me that what exactly is the name of that company which became India's first company. See, such kind of things are really very important. जब भी आपको यहाँ पे दिखे India's first, India's biggest, largest, smallest, so ऐसी सी चीज़ों को आपको यहाँ पर कैप्चर करना होगा, important news articles को कैप्चर करना होगा और उनको याद रखना होगा from the exam point of view, because they are really very important. So when I talk about the right answer to the question, it is option A, that is Godi India Private Limited, जो कि एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है. इट हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट कंपनी टू गेट BIS सर्टिफिकेशन फॉर द मेड इन इंडिया लिथियम आयन सेल्स. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट यूनेस्को. ठीक है जी, तो यहाँ पर इंडिया रिसेंटली इलेक्ट हुआ है एज अ स्टेट मेंबर ऑफ द इंटरगवर्नमेंटल कमेटी. सी, यूनेस्को की एक इंटरगवर्नमेंटल कमेटी है और उसके अंदर इंडिया एज अ स्टेट मेंबर इलेक्ट हुआ है. सो यू आर जस्ट रिक्वायर्ड टू टेल मी दैट व्हाट इज गोइंग टू बी द टेन्योर. क्या टेन्योर रहने वाला है इंडिया की, ये जो इंडिया इलेक्ट हुआ है उसका टेन्योर क्या रहेगा उस पर्टिकुलर कमेटी के अंदर. दैट इज व्हाट इज द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट. सो जब भी आपको ऐसी कोई न्यूज आर्टिकल मिलती है, सो हियर यू आर रिक्वायर्ड टू सी कि किन किन डायमेंशंस पे हमें उसको कवर करना होता है. एंड गाइस, हियर व्हेन आई टॉक अबाउट द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 2022 टू 2026, दैट विल बी द टेन्योर. सो यहाँ पर 3 चीजें इंपॉर्टेंट है. इंडिया रिसेंटली स्टेट मेंबर इलेक्ट हुआ है ऑफ द इंटरगवर्नमेंटल कमेटी, किसका, यूनेस्को का. और अगर जब यूनेस्को यहाँ पर न्यूज़ के अंदर आता है तो व्हाट यू आर रियली रिक्वायर्ड टू रिमेंबर, आपको पता होना चाहिए कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है. इट्स हेडक्वार्टर इज बेसिकली इन पेरिस, फ्रांस. और गाइस, जब हेडक्वार्टर हमने कर लिया है तो यहाँ पर उसके डायरेक्टर जनरल के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, दैट इज ऑर्डर एजुले. सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने डायमेंशंस पर आपको कवर करना जरूरी है इन पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, विच रियली जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर रहते हैं और एग्जाम में भी उनके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी. तो कौन रिसेंटली MD और CEO अपॉइंट हुआ है SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी का, दैट इज व्हाट you are required to tell me. And here the right answer to the question is Paritosh Tripathi ji, who has been recently appointed as the MD and CEO of SBI General Insurance Company. So the next question is on the metaverse virtual launch named Universe. तो recently इंडिया के एक बैंक ने अपना एक metaverse virtual launch create किया है, that is known as यूनिवर्स. सो गाइस, यहाँ पर इस पर्टिकुलर नाम से ही आप बता सकते हैं कि क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का सही आंसर, बिकॉज हियर यू आर जस्ट रिक्वायर्ड टू टेल मी द नेम ऑफ द इंडियन बैंक. और यहाँ पर गाइस प्लीज देखिए कि जो पहले 3 लेटर्स हैं, दैट इज यूनी, दैट इज व्हाट इज द राइट आंसर, दैट इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया. तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपना एक मेटावर्स वर्चुअल लॉन्च यहाँ पर क्रिएट किया है, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्स. दैट इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू रिमेंबर फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री MOU, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी कि इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री के साथ हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक MOU साइन किया है जिसका उनका टारगेट है टू एलिमिनेट ट्यूबरक्लोसिस इन इंडिया.
तो गाइस क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब? सी वी ऑल नो कि 2030 तक वर्ल्ड का टारगेट है एलिमिनेट करना ट्यूबरक्लोसिस को, बट इंडिया के अंदर उनका जो टारगेट इंडिया ने क्या किया है 2025 तक वी आर गोइंग टू अचीव elimination of the tuberculosis from India. And when I talk about the right answer, जो मिनिस्ट्री का नाम है जिसने हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ यहाँ पर MOU साइन किया है, दिस इज बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज. तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के साथ मिलकर यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री इज गोइंग टू टेक अप द actions in order to eliminate tuberculosis from India. So I hope this is very much clear. Let's move on to the next question. And the next question is on about the India's unemployment rate. तो recently Center for Monitoring Indian Economy ने यहाँ पर डेटा रिलीज किया है कि जून 2022 के अंदर इंडिया की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इट बेसिकली इंक्रीज. तो वो उसकी जो नई वैल्यू है वो क्या है, दैट इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी. सी अनएम्प्लॉयमेंट, see employment generation is a very important topic in our syllabus, and that is why all such kind of data which is related to the unemployment rate in our country, this becomes really important from the exam point of view. So guys, here when I talk about the right answer is 7.8%. so यहाँ पर कुछ important data यहाँ पर mentioned है. so जब हम बात करते हैं कि रूरल एरियाज में व्हाट एग्जैक्टली वाज द परसेंटेज, इट वाज बेसिकली 8.03%. ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि एग्जाम के अंदर आ सकता है, रूरल का भी आ सकता है, अर्बन का भी आ सकता है, ऑल ओवर इंडिया का डेटा भी पूछा जा सकता है. तो दिस इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी. और एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ कि रिसेंटली जो RBI का फेज 1 एग्जाम हुआ है वहां पर क्वेश्चन आया था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से कि रूरल इंडिया के अंदर, अर्बन इंडिया के अंदर जो सेक्स रेशियो है एज पर NFHS 5 वो क्या है. सो दैट इज व्हाई यू आर रियली रिक्वायर्ड टू रिमेंबर ऑल सच काइंड ऑफ डेटा फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द इंडियाज फर्स्ट रेलवे स्टेशन. तो इंडिया का वो पहले रेलवे स्टेशन विच हैज स्टार्टेड ऑगमेंटेड रियलिटी एक्सपीरियंस, दैट इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी. जस्ट टेल मी द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट रेलवे स्टेशन विच हैज ऑगमेंटेड रियलिटी एक्सपीरियंस जो उन्होंने यहाँ पे सर्विस स्टार्ट की है. सो वेरी इजी क्वेश्चन गाइज, एंड दिस इज व्हाट this India's first makes this particular question very important from the exam point of view. और यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द टाटा पावर कंपनी लिमिटेड. आपको मुझे बताना है कि वो इसमें से कितना अमाउंट स्पेंड करने वाले हैं टू एक्सपेंड द कैपेसिटी इन इट्स रिन्यूएबल बिजनेस इन द नेक्स्ट 5 years. इन द अपकमिंग 5 years, व्हाट इज एग्जैक्टली द अमाउंट दैट दे आर गोइंग टू स्पेंड इन इट्स रिन्यूएबल बिजनेसेस. सी इस तरीके का क्वेश्चन गाइज RBI के फेज 1 एग्जाम में आया था इन ईयर 2021. So that is why such kind of news articles are really very important, and you should cover such kind of news articles to answer the question successfully in the exam. So यहाँ पर guys right answer is option C, that is 75,000 crore. That is the amount which the Tata Power Company Limited is going to invest. ठीक है, sorry, not to invest, it is going to spend. Now let's move on to the next question, and the next question is on the Interpol. तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी कंट्री ने रिसेंटली ज्वाइन किया है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इंटरपोल, उसके इंटरनेशनल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन डेटाबेस को. अ वेरी इजी आंसर गाइज, द राइट आंसर इज बेसिकली इंडिया ओनली. तो यहाँ पर मुझे एक और इंपॉर्टेंट चीज याद आती है कि गाइज ईयर 2018 में और 2019 में यहाँ पर इंटरपोल के ऊपर लगातार क्वेश्चन आए थे that what exactly is the headquarter, where is the headquarter of Interpol, and that is what really very important to be remembered by you. So guys, when I talk about the headquarters of Interpol, it is basically in Lyon, France. So very important thing that you must remember from the exam point of view. See guys, that is how when you will be having an idea ना कि previous year questions किस तरीके के आए हैं, क्या क्या dimensions पर questions पूछे जा रहे हैं, then it will really be very easy for you to identify कि मुझे इस न्यूज़ आर्टिकल से क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे इस न्यूज़ आर्टिकल से एक्सट्रैक्ट करना है. एंड व्हेन you will see that particular question in the exam, you will definitely be acing through that particular question successfully. ठीक है, let's move on to the next question. So the next question is, you are just required to tell me कि recently RBI से कौन सी कंपनी को, ठीक है,
मिला है पेमेंट एग्रीगेटर गेटवे लाइसेंस। सी रिसेंटली आरबीआई ने अप्रूव किया है पेमेंट एग्रीगेटर गेटवे लाइसेंस to 3 companies, and guys all these 3 companies have gotten that particular license, that is Razorpay, Pine Lab and Stripe. This is the name of these 3 companies. I hope this is clear. Let's move on to the next question. So the next question is on the Karnataka Digital Economy Mission. तो उन्होंने recently partnership की है इनमें से किसी एक बैंक के साथ to support the startup ecosystem of Karnataka. See, whenever we talk about startups, employment generation, entrepreneurs, that particular topic really becomes important from the exam point of view क्योंकि वो clearly syllabus के अंदर mention किया गया है, and that is why such kind of questions are really very important. So now just tell me the name of the bank with which Karnataka Digital Economic Mission has partnered, जिससे कि हम सपोर्ट कर सकें स्टार्टअप इकोसिस्टम को। कैसे करेंगे? बाय प्रोवाइडिंग देम कोलैटरल फ्री लोन्स, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर। सो गाइस हियर द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो हमने यहाँ पे पढ़ा एसबीआई, और एसबीआई के बारे में आपको पिछले 2 सेशन में बता चुका हूँ कि जो रिसेंटली हैं उसके एमडी जो बने थे दैट इज आलोक कुमार चौधरी जी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी रिसेंटली एक्सिस बैंक ने इस इंडिया के कौन सी फोर्स के साथ एमओयू साइन किया है अंडर द पावर सैल्यूट इनिशिएटिव। सी सबसे पहले यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पावर सैल्यूट इनिशिएटिव है ये कौन से बैंक का है, दैट इज एक्सिस बैंक। तो उसने कौन सी इंडिया की डिफेंस पर्सनल के लिए ये पर्टिकुलर चीज यहां पर उनके सैलरी अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए लॉन्च किया है। एंड गाइस हियर द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज इंडियन एयरफोर्स। तो गाइस जब भी यहां पर इंडियन की ये जो डिफेंस फोर्सेस न्यूज के अंदर आते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड रिमेंबर, दैट इज उनके चीफ कौन है। सो गाइस व्हेन आई टॉक अबाउट द चीफ ऑफ द इंडियन एयर फोर्स, सो ही इज नन अदर देन द एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी जी। ठीक है जी, so that is the right answer. तो चीफ जब भी आते हैं guys, you must remember that what exactly is the name. Let's move on to the next question, and the next question is on the Delta ranking of the Shyama Prasad Mukherjee Rural Mission. तो इस तरीके की जितने भी मिशंस है उसमें जो रैंकिंग्स यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं, तो उसके लिए आपको मुझे बताना है कि जून मंथ के लिए इनमें से कौन सी स्टेट को यहाँ पर कौन सी स्टेट है जिसने की टॉप किया है, कौन सी स्टेट वाज रैंक्ड फर्स्ट इन दिस पर्टिकुलर डेल्टा रैंकिंग फॉर द मंथ ऑफ जून। एंड हियर द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज झारखंड। तो झारखंड ने जीता है। एंड गाइस व्हेन आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर मिशन, ये जो रैंकिंग है ये इसको रिलीज कौन करता है, इट इज रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। दैट इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू रिमेंबर फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड गाइस सी ऐसे क्वेश्चंस आपको याद रखने चाहिए क्योंकि अभी रिसेंटली आरबीआई के फेज 2 एग्जाम के अंदर देयर वाज अ क्वेश्चन लाइक दैट कि एक स्कीम का नाम दिया गया था और ऑप्शंस दिए गए थे कि कौन सा जो सिटी है उसको यहाँ पर रैंकिंग मिली है उसकी implementation के लिए, and that is what you are required to remember from the exam point of view. Let's move on to the next question, and the next question is on the India US counter narcotic working group meeting. तो you are just required to tell me कि उस मीटिंग को हेड किसने किया था। जो इंडियन डेलीगेशन गई थी उस मीटिंग के अंदर उनके हेड कौन थे? एंड गाइस हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज एस एन प्रधान। तो एस एन प्रधान जी बेसिकली हेडेड द इंडियन डेलीगेशन फॉर दैट पर्टिकुलर मीट। Let's move on to the next question. So the next question is, Ministry of Home Affairs has set up a committee to assist the central government in the delimitation of municipal wards. So guys, म्यूनिसिपल वार्ड्स उसकी डिलिमिटेशन के लिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर इंडियन यूनियन टेरिटरी के लिए एक ऐसी कमेटी बनाई गई है, एंड दिस इज अ 3-member कमेटी। याद रखिएगा, और इसके जो हेड होंगे, इस कमेटी को जो हेड कर रहे हैं, इट इज बेसिकली द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट, दैट इज विजय देव जी। ठीक है जी, तो यहां पर आपको ये सभी इंपॉर्टेंट डायमेंशंस को याद रखना है। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज दिल्ली। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पंजाब नेशनल बैंक हैज साइंड एन एमओयू विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्म्ड फोर्सेस अंडर इट्स पीएनबी रक्षक स्कीम। तो यहां पर मुझे बताना है कि बेसिकली इनमें से कौन सी फोर्सेस के लिए ये पर्टिकुलर पार्ट एमओयू साइन किया है पीएनबी ने। एंड गाइस हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज इंडियन एयर फोर्स। वी हैव ऑलरेडी डन दिस पर्टिकुलर पार्ट, दैट हु इज द चीफ ऑफ द इंडियन एयर फोर्स। Let's move on to the next question. So the next question is that National Payment Corporation of India has collaborated to provide master degree program in the digital payment. तो उसके लिए जो NPCI है उसने कौन से इंस्टीट्यूशन के साथ एक MOU साइन किया है? That is what you are required to tell me only the name of the
ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ एनपीसीआई ने ये एमओयू साइन किया है। एंड द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज मुंबई। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिन्होंने महाराष्ट्र मेट्रो के साथ मिलकर एक अचीव किया है वर्ल्ड रिकॉर्ड, और वो रिकॉर्ड यहाँ पर था कंस्ट्रक्टिंग द लॉन्गेस्ट डबल डेकर वायडक्ट। तो यू आर जस्ट रिक्वायर्ड टू टेल मी कि कौन सी यहाँ पर प्लेस है जहां पर ये पर्टिकुलर डक्ट को कंस्ट्रक्ट किया गया है। इट इज नागपुर, मुंबई, नांदेड़, थाने और सतारा। एंड गाइस हियर द राइट आंसर इज नागपुर, विच इज इन महाराष्ट्र। ठीक है जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसीज हैज टेस्टेड अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वेस्ट डिस्पोजल टेक्नोलॉजी बाय रिलीजिंग 78 kg ऑफ गार्बेज बैग फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो इसमें से कौन सी वो स्पेस एजेंसी है जिसने ये अचीवमेंट यहाँ पर अचीव की है? दैट इज ऑफ रिलीजिंग 78 kg ऑफ गार्बेज बैग फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। एंड गाइस हियर द राइट आंसर इज अमेरिकन स्पेस एजेंसी, दैट इज नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। सो गाइस व्हेन आई टॉक अबाउट द नासा, आपको यहाँ पर ये भी याद रखना है कि उसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है। ठीक है जी, तो व्हेन आई टॉक अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटर इज बेसिकली बिल नेल्सन। सो गाइज यहाँ पर जब भी कोई ऐसी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन न्यूज के अंदर आती है, यू आर ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रिमेंबर कि वो हेडक्वार्टर्ड कहाँ पर है, उसका चीफ कौन है। ये दो डायमेंशन आपको हमेशा कवर करने की जरूरत है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, जो तीसरी, अगर मान लो कि ओपीईसी जैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है या ओईसीडी है, तो उसके मेंबर कंट्रीज कितने हैं ये भी आपको याद रखना जरूरी है, बिकॉज सच काइंड ऑफ क्वेश्चन वाज आस्क्ड दिस ईयर एज वेल इन द एग्जाम। ठीक है, तो डू रिमेंबर दैट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द ब्रिजेंद्र कुमार Singhal, who has passed away recently. He was known as the father of dash. ठीक है जी, so this was a famous personality. See guys, whenever such kind of personalities in the news, you are required to remember कि वो personality कौन से profession से belong करती है, कौन सी स्टेट या कंट्री से बिलोंग करती है। सो व्हेन आई टॉक अबाउट द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज इंडियन इंटरनेट। ठीक है जी, सो ही वाज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन इंटरनेट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको मुझे बताना है इनमें से कौन सा वो पर्सनैलिटी है हु हैज बीन कॉन्फर्ड विद द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, गोल्ड एंड सिल्वर स्टार, विच इज बीइंग अवॉर्डेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ जापान। सो जस्ट टेल मी द नेम ऑफ दैट पर्सनैलिटी हु हैज बीन कॉन्फर्ड विद सच काइंड ऑफ अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ जापान। एंड गाइस हियर द राइट आंसर is Narayan Kumar. So Narayan Kumar is the right answer to the question. Let's move on to the next question. So the next question is, which of the following state government has launched a new scheme that is earn with learn? See, इस particular scheme के अंदर बेसिकली गवर्नमेंट क्या चाह रही है, जो भी बच्चे कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे हु ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम द स्कूल, बेसिकली ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स, उनको वापस से स्कूल के अंदर लेके जाया जाए अंडर द स्कूल चलो अभियान। सो गाइस यहाँ पर व्हेन आई टॉक अबाउट द राइट आंसर टू द क्वेश्चन कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है, इट इज बेसिकली ऑप्शन डी, दैट इज त्रिपुरा। सो त्रिपुरा इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जिसने पार्टनरशिप की है इन्वेस्टमेंट न्यू साउथ वेल्स, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट एजेंसी है। It has partnered to have roadshows for the IT companies that exist in Australia. So just tell me that what exactly is the name of that organization. It's NASSCOM, Niti Aayog, FICCI, CII, or none of the above. See, such kind of questions are being asked in the exam. That is why such kind of questions have been brought here for all of you to answer successfully in the exam. ठीक है जी, सो गाइज हियर द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज नासकॉम। तो नासकॉम के यहाँ पर हेड कौन है, दैट इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी, एंड दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू. डू नॉट फॉरगेट टू टेल मी दैट who is presently the head of the NASSCOM. So guys, now we are heading towards the last question of our today's session, that is here on your screen. So the next question is on the important days, that is World Population Day. So tell me that on which of the following days basically we celebrate the World Population Day. So let's see who will answer the question correctly. And guys, I am having a very important news information about this. When I talk about the population, so we all know that India is having the second highest population across the world. So now this particular data is going to change in year 2023. That means as per the World Population Prospect report released by the United Nations recently, they said that India is going to surpass China as the most population country in year 2023, and this is really a very important data which can be asked in the exam, जहां से क्वेश्चन आ सकता है. गाइस, रिपोर्ट किसने रिलीज की, क्या रिपोर्ट का नाम है, कौन सी कंट्री किसको रिप्लेस करने वाली है, कौन से ईयर में करने वाली है, दैट इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू रिमेंबर फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 11th of July. ठीक है जी. सो गाइस, दैट वाज द 50th क्वेश्चन, एंड आई रियली बिलीव दैट all these 50 questions are really very much
Clear to all of you? Now this is the time that you should tell me your scores. See guys, I really believe कि ये जो पूरा session है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा fruitful रहा होगा, and now you are always required to analyze, and उसके analyze करने के लिए you are really required to remember that what exactly was your score. आपका स्कोर क्या था, कौन से एरियाज, किस टाइप के क्वेश्चंस को आपको काम करने की जरूरत है, सो दैट यू कैन एस द एग्जाम. सो डू नॉट फॉरगेट टू टेल मी दैट व्हाट एग्जैक्टली योर स्कोर वाज आउट ऑफ 50 in this particular session. So guys, I really believe that this session was really fruitful and beneficial to all of you, and I will be keep on bringing such kind of sessions for all of you in the future as well. So if you are having any kind of feedback, you can give the feedback on the mail, and if you are having any queries, you can also post your queries, give us the queries on the hello@edutap.co.in. You can also call us at 8146207241, and apart from that, you can also post your queries in the comment section below. So guys, thank you for joining us. Wish you all happy learning.